So in the previous session, we have seen about the introduction about the terpenoids. We have completed our classification and all that. Regarding terpenoids, we have seen terpenoids, volatile oil. Their introduction part has been completed. Now we'll see today different drugs. Okay. We have seen about the introduction. We have seen about the properties. We have seen about the their classes. Okay, examples of terpenes. We have seen that. Okay. This table was very important. Many times they have already asked question on this. Then we have seen the types of volatile oil. We have seen the hydrodistillation method, extraction methods for volatile oil. We have seen already. We have seen the chemical test. So just remember a drug containing volatile oil, a drug containing your terpenoids. Terpenoid volatile oil containing drug you have to treat with the alcoholic solution of your Sudan red. Alcoholic solution of Sudan red. So we are going to get a red color in the oil globules. Oil globule में red color आ जाएगा. Again we have also seen the occurrence of your we have seen the occurrence of terpenoids also, and today we are going to see the drugs, terpenoidal drugs. So first drug from your today's session is nothing but the okay. So this chemical test you have to remember terpenoids or volatile oil when you treat it with the alcoholic solution Sudan red, you are going to get a red colored globules, red colored oil globules. That is due to the presence of volatile oil. Again, TS of drug containing terpenoids and volatile oil. So you have to add a drop of tincture of alkana. Again, red color you are going to get. Okay. We have seen the occurrence of terpenoid also. First drug from these terpenoids. Am I audible you clearly? Audible I agree. So first drug from this category is a chinopodium oil. Chinopodium oil. Chinopodium oil. So you have to remember the synonyms, chemical constituent and uses. That's it. Okay, from such kind of drugs. But I will explain. So this chinopodium oil is also known as American worm seed oil. इसको बोलते हैं American worm seed oil. तो इसमें ही आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या हो सकता है. As its synonym is also American worm seed oil. So it is having anthal material. So it is known as American worm seed oil. It is also known as chinopodiol. Chinopodiol. Now biological source of this plant. So again, it is a volatile oil obtained from steam distillation from the fresh as well as flowering as well as fruiting tops of the plant known as a chinopodium ambrosioides. Ambrosioides. So chinopodium ambrosioides. So that is the plant. So volatile oil obtained from the steam distillation of the fresh as well as flowering as well as fruiting stops. Fruiting stop. मतलब जो प्लांट है उसका जो स्टेम है आपका, उसके बाद उसके जो फ्लावरिंग टॉप्स मतलब जहाँ पे फ्लावर ब्लूम होते हैं वो पूरा पार्ट, एंड फ्रूटिंग टॉप्स मतलब जहाँ पे फ्रूट भी लग रहा है, फ्रॉम द चिनोपोडियम एम्ब्रोसियोइड्स फैमिली चिनोपोडेसी. इट शुड कंटेन नॉट लेस देन 65% ऑफ एस्केरिडोल. इसमें होता है एस्केरिडोल, तो उसके ऊपर भी केमिकल कांस्टेंट है उसका एस्केरिडोल, ये इंपॉर्टेंट. Now it is found in the eastern and central USA. Eastern and central USA में होता है. Indigenous to Caribbean island, मतलब ये यहाँ पे नहीं होता है लेकिन indigenous to Caribbean island. Cultivated in the Europe, then Maryland, Mexico, Canada, India and West Bengal. Caribbean island में इंडिया से जाता है इसलिए indigenous to Caribbean island. Chemical constant is important. So volatile oil, it has a volatile oil consists of एस्केरिडोल. एस्केरिडोल तो एस्केरिडोल क्या है? इट इज नथिंग बट द अनसैचुरेटेड टर्पेन. अनसैचुरेटेड टर्पेन. ओके, इट इज अनसैचुरेटेड टर्पेन peroxide 70 to 80% that is the एस्केरिडोल is present in the chinopodium oil. है ना, तो ये है ना, एस्केरिडोल क्या है? अनसैचुरेटेड टर्पेन है. सो अनसैचुरेटेड टर्पेन peroxide which is 70 to 80% from this oil एस्केरिडोल. It also consists of gamma, thymine and L-limonene and as well as camphor. These are the active constants. So out of that, most important you have to remember this ascaridol. Question इसके ऊपर एक बार आ चुका है. Ascaridol is a main component of oil that are present in the following crude drug. So chinopodium oil. Chinopodium oil is ascaridol. Right?
Now use case का it is a valuable anthelmintic. Anthelmintic is what? So anthelmintic means any drug that can remove worms from your intestine. देखो बचपन में अगर आप बहुत ज़्यादा शक्कर खाते हो, बहुत ज़्यादा शक्कर खाते हो, चॉकलेट खाते हो, क्या होता है आपके पेट में worms तैयार होते हैं, helminthiasis. So you can easily observe that worms. जब आप ये करते हो ना, डिप्रिक्शन करते हो ना, जब आप उसके में ये worms भी आ जाते हैं. Anthelmintics means what? These are the drugs which will expel the worms from your intestine. So anthelmintics. Okay. So it is a valuable anthelmintic and specifically used for the roundworm. Roundworm helminthiasis, known as ascariasis. Ascariasis. Roundworms का अगर intestine में है, to expel the hookworms also, then dwarf tapeworms, intestinal amoeba. So if you got amoebial infection in the intestine, so again this drug is used as an anthelmintic. Anthelmintic against the roundworms, then hookworms, tapeworms, and intestinal amoeba. It is used for the veterinary practice also. Used in the veterinary practice also. It is contraindicated in the patient with kidney and liver impairment. जिसको किडनी का लिवर का प्रॉब्लम है उस पेशेंट में यूज नहीं करना. So just remember the biological source, this synonyms, then biological source, okay, then chemical constant, main important chemical constant, and its use. That's it. Substitute for this Chenopodium okay, abrosioids lean, Chenopodium album lean. ये होता है उसका ये substitute होता है. Not important. Just remember the biological source and chemical constant. That's it. Next आता है आपका eucalyptus oil. Next one is nothing but the eucalyptus oil. So again it is important. So eucalyptus oil. So you might have seen this eucalyptus oil in a various Ayurvedic formulations. बहुत सारे Ayurvedic formulation होते हैं जिनके से eucalyptus oil किसमें होता है, जो oil massage oils होते हैं. Okay. So Ayurvedic formulation massage oils, leha, okay, like that. So they are used for the various purpose like joint pain, for body ache, etc., etc., for massage. So in that eucalyptus oil is there. So what is the synonym? Synonym for eucalyptus is nothing but the eucalyptus, okay, dinkum oil, eucalyptus or dinkum oil, and it is also known as lemon grass tree. Okay, eucalyptus oil, dinkum oil, and lemon grass tree. So biological source again a volatile oil is there. It is obtained from steam distillation. आपको यहाँ पे यह ख्याल रखना है, for extraction of volatile oil from steam distillation, which apparatus is used? Clavinger's apparatus is used. Okay, we have already seen. Again, I will like to remind you. Clavinger's apparatus is used for the extraction of volatile oil from the extraction of volatile oil by the steam distillation. ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में पूछा था. ऑलरेडी ये जीपैट में भी आ चुका है. रिसेंटली यहाँ चाहिए, आई थिंक जीपैट 2018 में. बट ये क्वेश्चन मुझे इंटरव्यू में भी पूछा था व्हेन आई वाज देयर इंटरव्यू फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट. तो सेम क्वेश्चन पूछा है. रिमेंबर क्लेवेंजर्स apparatus is used for the extraction of volatile oil by steam distillation method. So again volatile oil obtained by steam distillation from the fresh leaves of Eucalyptus globulus family Martesii. Eucalyptus globulus family Martesii. और एक ड्रग आता है Martesii family का clove, CLOVE. Clove also belongs to Martesii family, and biological source for clove is Eugenia caryophyllus family Martesii, dried flower buds. So when I will take clove, at the time I will use it. Cultivated in the United States, Spain, Portugal, and India. It is indigenous to Australia and Tennessee. Okay. Now, chemical constant. The main chemical constant is a cineol. Main chemical constant is cineol, which is also known as eucalyptol. It's so known as eucalyptol, which is 80%. Okay, out of the 80% जो oil होता है, oil जो है इसमें 80% क्या रहेगा? Eucalyptol. So 80% eucalyptol is present in the eucalyptus oil. So eucalyptol or cineol. Cineol is also known as eucalyptol, and it also consists of, in addition to that, it the main constant. So main constant is the cineol and eucalyptol. In addition to that, it consists of pinene, then campine, and traces of phalangrin. Then इसका use क्या है? It is used as a counter irritant. Counter irritant, it is an antiseptic as well as expectorant.
So you might have seen, आपको ये जो कोरोना का पीरियड चल रहा था उसमें एक कैप्सूल बहुत ही मतलब जिसका कैप्सूल का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा, ये उसका एक नाम है कारवाल, CARWAL, कारवाल प्लस कैप्सूल होता है। कारवाल प्लस आपको खाना नहीं है, वो लेना है, उसको फोड़ना है, रुमाल के ऊपर उसका कंटेंट डालना है और बस आपके मुंह में नाक के सामने। So in that you have eucalyptus oil to oil different kind of oils, volatile oils. So that was very much famous during the corona to prevent the infection. This eucalyptus oil मतलब नीलगिरी तेल, eucalyptus मतलब क्या, नीलगिरी होता है. So counter irritant used in the pain to relieve the pain. It is analgesic by acting by a counter irritant mechanism. Then it is antiseptic also and expectorant also. So eucalyptus oil. Okay. Are you getting my voice properly? Now, chemical test for volatile oil. Chemical test अगर ये already अपन देखा है, but see, for chenopodium oil, 1 ml of chenopodium oil you have to take in a test tube. Add few pieces of porcelain because you are going to heat that test tube. वो brush नहीं होना चाहिए. So you have to add pieces of porcelain. Then heat. You will get a golden yellow color. You will get a golden yellow color. 1 ml of chenopodium oil in the test tube. Add one piece of porcelain. Okay, and heat it. You will get a golden yellow color of the oil. You have to perform this test cautiously because the chenopodium oil has tendency to explode. ये explode भी हो सकता है when you are going to eat. Then eucalyptus oil होता है, उसका टेस्ट क्या है? So you have to take oil 2.5 ml oil in the 5 ml purified petroleum or benzene. Then 5 ml you have to add sodium nitrite and 5 ml glassy lactic acid. Crystals of palladium nitrate do not develop or do not form within a 10 minutes. So after 10 minutes you are going to get a crystal of palladium. Within a 10 minutes you will not get this. Next one is the turpentine oil. Turpentine oil. Turpentine oil. Okay. So the term terpene itself, it was obtained from the turpentine oil. Okay. Because the oil obtained from a pine tree. Okay. It was obtained from resin of, so distillation of resin of pine, resin obtained from pine tree. You are going to get a turpentine oil, and that there was a hydrocarbons, and that's why they have given the name terpenes. Okay. So synonym क्या है इसका? It is known as the rectified oil of turpentine, and it is also known as the oleum terbinthi. Oleum terbinthi. Biological source and geographical source. So again, volatile oil obtained from steam distillation of resin. Resin obtained from resin. Okay. As such, this oil is not present in the plant. It's present in the resin of that plant. तो रेजिन का फ्रैक्शन लेना है आपको, उसको डिस्टिलेशन करना है, उसके बाद में ये ऑयल मिलेगा, उसके बाद में ये आपको ऑयल मिलेगा, कौन सा? टर्पेंटाइन ऑयल. So it is a volatile oil obtained from steam distillation of resin, known as a Pinus roxburghi. Pinus roxburghi family, Pinaceae. This plant is mostly found in the south areas, southern areas of India. Commercially available in the India, it is also available in the US, France, Russia. Cultivation collection, इसको rainfall लगता है around 100 to 175 centimeter. It can grow on a variety of soils like limestone soil, band of quartz and sandstone, even etc. Even it can grow on a bare rock soil. Plant grown by sowing the seeds. इसका seeds मिलता है. You have to raise the plant by sowing the seeds in the March, April. Seedlings you have to transplant into July. After 2 years of age, it will become a, it will okay, after 2 years of just before beginning of monsoon, you have to collect the leaf, okay, collect the resin from this. Not much important, cultivation collection important nahi hai, but chemical constants they are important in this case. So means chemical constants they are very very important. Cultivation collection parameters for few plants they are important. Most of the cognosy, in the case of pharmacognosy, they are going to ask a question from this. So whatever WHO parameter we have seen, leaf constants, then your WHO parameters for like bitterness value, hemolytic index, ash value, acid insoluble ash, okay. Digestional system of medicine, their laws. So that part is important. Again, glycopodium score method, that is important. Type of stomata, type of calcium oxalate crystal, that part is important. After that, okay. After that, leaf constant and leaf constant, then types of tissue in the plant.
ground tissue, permanent tissue, etc. Microbial limit, heavy metal limits, they are important. Heavy metal limit कितना होना चाहिए and microbial limit कितना होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. After that, from the alkaloid, glycoside, terpenoids, tannins, volatile oils, carbohydrates, okay, then resins. From that part, what they are going to ask you, they are going to ask you classes. Okay, classification, for example, class of glycoside, classification of your tannins. What is meant by hydrolyzable? What is meant by condensed tannins? What is meant by pseudo tannins? What is meant by true? What is meant by proto? What is meant by pseudo alkaloids? What is meant by false alkaloids? Their taste, their examples. So that point of part are important. Specific identification tests are important. After that, they are going to ask you individual drug, their synonyms, then cultivation collection parameter for few drugs only, not all, and then chemical constants are important, their uses, and then adult drugs. So in the pharmacy, this part is only important. या बाकी कुछ पढ़ना नहीं आपको, बस इतना ही इसके ऊपर फोकस करना, because after all they are going to ask you 10 question from this pharmacognosy, right? So chemical constant in this turpentine oil, so it's a oleoresin. Okay, what is resin? What is oleoresin? We are going to see later on. Okay, so oleoresin is volatile oil plus resin. Oleoresin product consists of 25% turpentine oil. So if you obtain a resin, oleoresin, from that 25% there is a turpentine oil and 70% is cellophony. एक बार क्वेश्चन आ चुका है. Cellophony is often found. So cellophony is a pharmaceutical aid used in the different pharmaceutical. Okay, cellophony is a pharmaceutical aid. So after the distillation of this resin from turpentine, so you are going to get a turpentine oil, and whatever remaining, that is known as a cellophony. Okay, so turpentine oil कहाँ से आता है? Oleoresin से आता है. Oleoresin obtained from turpentine. Okay, और oleoresin obtained from, यहाँ पे देखो, resin obtained from pinus roxburghi, Pinaceae, मतलब ये पाइन प्लांट होता है, उससे ये रेजिन आता है, आपको रेजिन कलेक्ट करना है, and after collecting this oleoresin you have to perform distillation, and in the distillation you are going to get turpentine oil, and whatever is remaining is known as a cellophony. So 25% turpentine oil is there and 70% is a cellophony. Cellophony is used as a pharmaceutical aid. Pharmaceutical बाकी से बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं. So turpentine oil consists of, oil में क्या करेगा? Turpentine oil consists of a alpha pinene, major compound alpha pinene 20 to 30%, then beta pinene, then beta pyrrolate, delta 3 Coriendar, okay, delta 3 Coriendar, beta pinene, beta pyrrolate, alpha pinene, that is a major compound. So Indian turpentine oil consists of less poisonous. Indian turpentine oil जो होता है वो less poison होता है as compared to other, because इसमें क्या होता है, less poisonous pinene होता है and less compound होता है, pinene इसमें कम होता है, but content of cyanidin जो होता है ज़्यादा होता है Indian turpentine oil. यूज क्या है इसका? What is the use of turpentine? To counter irritant and root efficient, antiseptic as well as expectorant. It is used in the manufacturing of synthetic pine oil. Disinfectant है, natural insecticide है. It is used in the paint and varnishes. That is the use. Next we'll see. Next drug is nothing. Carawy is nothing but the volatile oil containing drug. आवाज येत आहे का? Carawy is nothing but the volatile oil containing drug. Carawy. So what is the synonym? So caram, okay, caram is the synonym. Carawy seed and caram, they are the synonyms for Carawy. Carawy का synonym याद रखना है आपको. Carawy and caram, Carawy seeds. Caram and Carawy seeds. So what is that? So again, dried fruit soap. क्या है dried fruit soap? Caram Carawy. Family क्या है? Umbelliferae. Family is the Umbelliferae. Caram Carawy, family Umbelliferae. So Umbelliferae family में एक there is a specific characters of umbelliferous family, fruits of umbelliferous family. One is the umbelliferous fruit. So umbelliferous fruits, if you try to break down, it will break down into two identical slices. So if you try to break down the coriander को break करो, half part अलग होगा, half part अलग. Main important characteristic of this umbelliferous family is the cremoka.
CREMO, CRO, CREMO, CRP, chemocarb. So chemocarb means if you try to break down that food, it will break down in two equal parts. So cotyledon will break down in two equal parts. Chemocarb. So chemocarb is an important feature of your umbiliferous family. Question is आ चुका है. Now it contains not less than 3.5% of volatile oil. Weight volume by weight. Okay. Now it is indigenous to Holland, Central Europe, cultivated in the Asia, Europe and many countries. In India also it is found in the North Himalayan region, cultivated in the Kashmir and Garhwal and Chamba district. Garhwal Chamba district of Kashmir. Chemical constant in the Carawy 2.5 to 8%. इसमें volatile oil है. So 2.5 to 8% volatile oil. Out of that volatile oil, out of that volatile oil, 45 to 65% is carbon. So main important component is carbon. CARBON. Carum carvi umbelliferi. So 2.5 to 8% volatile oil. Out of that 45 to 60% जो volatile होता है उसमें 60% सॉरी जो volatile oil होता है वो तो 2.5 to 8% है स्टैंड, बट जो volatile oil है उसमें ही मेन कंपोनेंट का है. So उसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है? मेन कंपोनेंट ऑफ योर volatile oil is nothing but the carbon. Okay, carbon is the main component of volatile oil. Then limonene is there, another one. Then carbacol is there. These are the secondary important chemical constants. So main important chemical constant is the carbon, CRBON. Then next one is nothing but the uses. इसका use क्या है? It is a aromatic, it is a carminative, okay, stimulant, flavoring agent for bread and biscuits and cakes. Bread, biscuits, बिस्कुट जो होते हैं, केक जो होते हैं, उसके लिए फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं. कैरावे, कैरम कार्बन. Carbon is the main volatile oil content. याद रखना है. वो substitute, तो substitute with the Indian deal fruit. Indian deal fruit. तो कैरावे जो होता है इंडियन डील फ्रूट मतलब शेपू. त्याला शेपू म्हणतात. शेपूची भाजी जी असते त्यामध्ये जे शेपूची भाजीला सीड त्याला शेपा म्हणतात. उसको शेपा जो शेपू की भाजी होती है उसकी इंडियन डील फ्रूट. Indian deal fruit. So it is also chemocarb. So caraway is substituted with the Indian deal fruit. Then cuminum saminus. Cumin मतलब जीरा होता है. Cumin seeds is also substituted with the cuminum saminus. Then also जीरा. जो cuminum होता है उसको जीरा बोलते हैं. It consists of aldehyde and not carbon. cumin में कार्बन नहीं होता, उसमें aldehyde होता है. cumin aldehyde, not a carbon. Okay, distinguish. So caraway. Okay, just remember the biological source Carawy family umbelliferi. Remember the volatile oil 2.5 to 8%. Out of that volatile oil 40 to 60% is carbon. That is the main component. यूज क्या है? जितने भी umbelliferous fruit है जिसमें volatile oil होगा उसका यूज ही सेम है. aromatic, carminative, stimulant and flavoring. ये सब यूज सेम है. Next is nothing but you can see over here. This is known as a caram carpine. कुछ ऐसा दिखता है. And seeds you will find. Look, cumin seeds like this, caraway seeds. Next is nothing but the cardamom. Cardamom means it is known as a इलायची. हिंदी में इसको इलायची बोलते हैं. कार्डमम. ओके, मराठी मध्ये पण इलायची. कार्डमम is again a volatile oil containing drug and everybody use this cardamom. Daily in the condiments and spices. Okay. So what is the name? It is known as a cardamom fruits or cardamom seeds or simply cardamom or small cardamom. Same names भी याद रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा. Cardamom fruits, cardamom seed, cardamom, small cardamom. Biological and geographical source. Simple है. So as it is a fruit, what is it? Dry fruits obtained from Eleutheria cardamom. Family क्या है इसका? Gingibraceae. Family is Gingibraceae. Eleutheria cardamom. Family Gingibraceae. Gingibraceae family किसका है? और तो plants belong to Gingibraceae family. जितने भी अंडरग्राउंड ड्रग्स ज्यादा होते हैं उनका फैमिली होता है जिंजिबरेसी. से फॉर एग्जांपल जिंजर, देन टर्मरिक, देन दिस कार्डमम, इलेटेरिया कार्डमम फैमिली जिंजिबरेसी.
शुड कंटेन नॉट लेस देन 4% ऑफ क्वालिटी। कहाँ पे होता है ये? मोस्टली इंडिया में, ये साउथ रीजन में आता है, क्योंकि जितने भी स्पाइसेस होते हैं वो सब साउथ रीजन से आते हैं। So also found in the Sri Lanka, Myanmar, Malaysia. In India, it is cultivated in the Karnataka, Tamil Nadu, Kerala. Guatemala is the largest producer of cardamom in the world. Guatemala, India का ही part है. Guatemala is the largest producer of cardamom in the world. In India, there are 4 species of this cardamom, known as the Aleppi species, then Mysore species, then Malabar species, and Mangalore species. So India there are 4 species of this cardamom. Cardamom के 4 प्रकार के जातियां है यहाँ पे। उनके नाम क्या है? एक एलेप्पी होता है, दूसरा मैसूर होता है, तीसरा मालाबार, चौथा मैंगलोर। ये सब सिटी के, मैंगलोर तो सिटी का नाम है, मालाबार कोस्ट होता है, मालाबार जो कोस्ट है उसके ऊपर मालाबार, मैसूर तो सिटी का नाम है। LFP, Mysore, Malabar, Mangalore. These are the varieties of your cardamom. Okay? So जैसे बोला मैंने, साउथ इंडिया में ये जैसा इसका कल्टीवेशन होता है। Cultivation collection is important for this drug. This time, so soil should be full of moisture and should be well drained. Soil लगता है आपको इस प्रोडक्ट के, तो soil should be full of moisture, should be well drained. Cultivation is done by sowing the seeds. Okay? Cultivation, sowing the seeds. Okay? Cultivation is done by sowing the seeds on a prepared seed beds. आपको क्या करना है? सीड बेड्स मध्ये काय आहे देखो, याच्यामध्ये काय कॉमन्स मध्ये मराठीमध्ये एकदम सोपं आहे. आपण जेव्हा होता आपण काय करतो, तो रोपं लावतो, है ना. बघा तुम्ही कुठल्याही प्रकारचं तुम्हाला इफ यू वॉन्ट टू ग्रो मँगो प्लांट, तुम्हाला जर आंब्याची बाग लावायची, तुम्ही काय करतात? डायरेक्ट आंबाच लावतो का? नाही, तुम्ही काय करतात? त्याची जे सीड असतो, you have to raise the seedling first. And as a rope the root नंतर लाव. Seedlings you have to raise. Likewise, this you have to cultivate this plant by doing sowing the seeds on a prepared seed beds. ठीक आहे. आपण वांग्याचं रोप आधी लावतो. वांगे लावताना कसं लावतो? वांग्याचे छोटासा वाफा पडतो, त्यामध्ये वांग्याचे काय होईल? वांग्याचे सीडलिंग्स तयार, रोपटे. आणि आफ्टर द टू मंथ्स ते रोपटे झाल्यानंतर तुम्ही नंतर ते वांग्याचे रोप ऍक्च्युअल फील्ड मध्ये लावतो. त्याला मग त्याच्याकडनं प्रोडक्शन घेतो. It is cultivated by sowing the seeds in the prepared beds, and after that, cardamom 71, cardamom 81, they are the highest yielding varieties. ये जो cardamom 61, cardamom 71 and 81, these are the varieties of cardamom. They will give you highest production of cardamom. Seeds are sown in the February to March, and February March में आपको seeds लगाना है इसके, and after 4 months old seedlings they are transplanted. Four months old plant they are transplanted into nursery bed. After 3 years transplantation, तो आपको सीड्स उसके सो कब करना है? फरवरी मार्च में करना है, एंड 4-5 महीने होने देना है आपको, तो सीडलिंग्स बड़े हो जाएंगे. आफ्टर 4 months you have to transplant the seedlings from nursery bed to the field. आफ्टर 3 years of transplantation, 3 साल के बाद में तब तक ये प्लांट बड़ा हो जाएगा, उसको रेज करना पड़ेगा आपको. You have to provide for proper fertilizers and water. Okay, irrigation should be proper. This plant after 4 years start bearing fruits. 3 साल के बाद में ये प्लांट को फ्रूट्स आना चालू. Capsules are collected, they are dried. Capsules you have to collect, they are dried. और ये इसका methods collection का भी simple होता है. You can collect these seeds by one, picking one by one. That is the picking method. And or another method is the beating method. Beating मतलब क्या? काटे घ्यायची, झाडालाच मारायचं. The Cardamom Act 1965 was passed by the government to increase the cultivation of cardamom in the Karnataka. Cardamom Act पास झालेला आहे. There was a Cardamom Act to increase the production of microscopic character. So epidermis is outer layer. Epidermis of pericarp is made up of polygonal tubular cells. Calcium oxide crystal and starch grains are present in the pericarp. Chemical constituent is making 2 to 8% volatile oil. Out of that is a cineol again. Main oil or main component or main terpene present in this oil is other aromatic compound like terpenyl acetate and terpenol, bornol. These are the another components. Main component क्या है इसका? cineol. So 2 to 8% volatile oil है इसमें, उसमें भी
मेन कंपाउंड क्या है सिनियोल अदर aromatic principle are nothing but the terpenyl acetate terpenol and bornol these are the another they are less important but cineol is particular ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे मेन volatile oil component of Elateria cardamom that is the cineol next one uses of this drug what uses of this crude drug so it is a carminative again aromatic flavoring agent ये तो आपको मालूम है it is used in the dry waters वगैरह aromatic carminative stimulant is a good flavoring agent now adulterant and substitute okay that is important now it is adulterated with the four different varieties Elateria cardamom is adulterated with the long white native cardamom long white native cardamom ये कहाँ पे आता है is found in the Sri Lanka and also known as big cardamom big cardamom original drug क्या होता है small cardamom now it is a less aromatic and bitter in taste if you compare with this original drug तो ये जो लॉन्ग वाइट नेटिव कार्डामम होता है इज अ बिटर इन टेस्ट एंड एज अ लेस अरोमा अरोमेटिक भी कम है नेक्स्ट होता है कोरारिमा कार्डामम so capsules of this plant capsules of this cardamom they are red brown in color and do not show presence of रज नहीं होता इसका मतलब इट इज ए जो कार्डामम होता है अपना अपना आपने देखा होगा उसके ऊपर एक लाइनिंग होता है so that lining is known as a raj okay then loose seeds of cardamom इसका आता है आपका substitute fully ripened seeds normally cardamom is nothing but the it is nothing but the dried ripe fruits including capsule के अंदर fruits होते हैं loose seeds of cardamom loose नहीं होना चाहिए it contain less volatile कार्डामम मस्क मतलब क्या है अंदर में सीड्स नहीं है ऊपर का छिलका ही है कार्डामम मस्क मींस ऊपर का कैप्सूल नहीं कैप्सूल का छिलका ही है बाकी अंदर में सीड्स नहीं है कार्डामम मस्क so it can be distinguished by ash value कार्डामम मस्क का ash value क्या रहेगा कम रहेगा might have seen this okay रेंज किसको बोलेंगे ये देखो यहाँ पे तो कार्डामम सीड्स ये दे दिया कार्डामम बड़ा होने के बाद में तो ये प्लांट हमने भी लगाया था इसको आप भी चुके थे क्लव का भी प्लांट लगाया था बट उसको एक प्लांट प्रॉपर्ली क्लाइमेट होना चाहिए मोस्टली क्लाइमेट स्टेबल क्लाइमेट दैट इज नथिंग बट द क्लाइमेट ऑफ योर साउथ एरिया साउथ में ही प्रोडक्शन होता है आपको लगता है कि मसाले कहाँ से आते हैं आपको लगता है असली मसाले सच एमडीएच आपको लगता है एमडीएच और एक मसाले इनका कुछ नहीं है ये सिर्फ दिखावा होता है ये सिर्फ क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं वहाँ उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते वहाँ से वो सब ऑब्टेन कर लेते अपने कंपनी में दिल्ली में बैठ के अपनी कंपनी में वहाँ पे कुछ मिक्सिंग वगैरह कुछ वॉशिंग वगैरह करके या फिर प्रॉपरली बना के मसाला बेचते हैं उनके घर से थोड़ी आता है लेकिन ठीक है दिखाई असली मसाले एमडीएच तो उनके घर का ही वैसा नहीं होता है ये मसाले सब आता है आपका साउथ इंडिया से सो नेक्स्ट इज कोरिएंडर यू नो वी आर डेली यूजिंग कोरिएंडर वी आर यूजिंग डेली आप जब भी सब्जी या जब भी बनाते हो भाजी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ए ब्लैक करी उसमें सब कोरिएंडर होता है कोरिएंडर सिनोनिम 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर सो इट इज नोन एज अ कोरिएंडर फ्रूट सिलेंट्रो क्या बोलते हैं इसको सिलेंट्रो सो सिलेंट्रो इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द कोरिएंडर इन द फॉरेन में इसको सिलेंट्रो बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं कोतंबीर दे दो लेकिन वहां पे कोतंबीर बोलेंगे या फिर आप समझ में नहीं आएगा इवन कोरिएंडर भी बोलेंगे उनको समझ में नहीं आएगा यू हैव टू कॉल इट सिलेंट्रो द फॉरेन क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है कोरिएंडर इज आल्सो नोन एज चाइनीज पार्सली क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कोरिएंडर इज नोन एज अ चाइनीज पार्सली कोरिएंडर फूड सिलेंट्रो चाइनीज पार्सली बायोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल सोर्स कोरिएंडर मतलब क्या धनिया मराठी में त्याला धनिया म्हणतात dried ripe fruits of plant क्या है dried ripe fruits of plant Coriandrum sativum family umbelliferae अगेन एक फ्रूट देखो आप इसको देख करेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा fruit will divide into equal two parts including cotyledon also will be divided अंदर का जो सीड है वो भी डिवाइड हो जाएगा umbelliferous उसमें फिर there are fruits of umbilic there are it is known as a cremocarp and then you will have styloid which is a attachment for seeds with the outer coat
ये सब उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है. Now it is cultivated in the European countries, Russia, Hungary, Poland, also cultivated in the India. Egypt में भी होता है, Morocco, etc. In India, it is widely distributed in the Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर. तो धनिया सब में सब तक होता है ना, सुबह सुबह धनिया लेके धनिया मत आपको कोरंबीर मतलब वो उसका लीव्स होता है, बट कोरिएंडर मींस फ्रूट होता है. कोरिएंडर इज द फ्रूट, लीव्स मतलब वो धनिया जो यूज करते हैं कोथंबीर ज्याला म्हणतात. कल्टिवेशन अँड कलेक्शन, इट इज अ खरीप क्रॉप. खरीप हंगामामध्ये येणारा पीक आहे. खरीप क्रॉप नीड्स अ हेवी टू लाइट ब्लॅक सॉइल. काळी माती लागते, ब्लॅक सॉइल लगता है. फ्रूट्स आर सोन बाय ड्रिलिंग मेथड. ड्रिलिंग मेथड म्हणजे काय? फ्रूट्स आर सोन बाय ड्रिलिंग मेथड. ड्रिलिंग म्हणजे काय? थोडंसं छेद करायचं तुम्हाला जमिनीमध्ये, कट्टा करायचा. कट्टा म्हणजे खूप मोठा झाला, छोटा आपल्या 2 बोटांनी 2-3 बोटांनी थोडंसं उकरायचे, त्यात 2-3 सीड्स टाकायचे. इज अ खरीप क्रॉप, needs a heavy to heavy black soil. Fruits are sown by drilling method, and it is a rotation crop. Rotation crop with the potato, ginger and onion. रोटेशन क्रॉप आहे. ठीक आहे. आता तुम्ही बटाटे लावले, अगर आपने बटाटे उगाया है, पोटैटो क्रॉप लिया है, इसके बाद में वो पोटैटो आता है आपका 3-4 महीने में, 3 or 4 months में. Immediately after digging the potatoes, you have to plant this coriander. उसके बाद में इमीडिएटली दूसरा कुछ. So it is a rotation crop with the sweet potato. Sweet potato मतलब रतालू. Sweet potato मतलब जो फास्टिंग के टाइम पे खाते हो, रतालू मतलब. Then ginger and then onion. कांदा कांदा आपका आले, कांदा या फिर जिंजर एंड पोटैटो, उसके साथ में ये रोटेशन क्रॉप. देन माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, prism type of calcium oxalate present in the epidermal cell. Prism type. Pericarp is made from a polygonal tubular cell with the stomata. Starch grains, they are present. Okay? The starch grains, trichomes, lignified reticulate parenchyma is absent. स्टार्च ग्रेन्स नहीं है, ट्राइकोम्स नहीं है, dignified parenchyma is absent. Volatile oil present in the midday. In the amelliferous fruit, again one feature. In the amelliferous fruit, volatile oil is present in the particular structure known as the midday. Midday नाम का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ही volatile oil लेगा. If you take a phenol, if you take a cardamom, if you take a any other caraway का, उसे सबके फ्रूट में ये midday होता है, और midday में ही volatile. Midday means it is a oil containing globules. Okay? Volatile. Also consists of alluvial grains, the polygon, liquid, cellulose parenchyma and endosperm. बाकी इंपॉर्टेंट बस इतना याद रखना, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल रहता है, ऑयल क्या रहता है, विटामिन. ट्राइकोम्स इसमें नहीं है क्योंकि इट इज अ फ्रूट. You can see this one is known as coriander. This one is known as coriander. So coriander fruit. So you might have seen. This is known as a complete fruit. So this part is known as cleopod. This dark lines, they are known as the primary ridge. Light lines, they are known as secondary ridge. This is known as cleopod. If you take a TS of this fruit, कुछ ऐसे दिखेगा. एपिकार, मेसोकार, एंडोकार, ये 3 कॉमन है. एपिकार, मेसोकार, एंडोकार. के बाद में कार्पोफोर मतलब सेंट्रल जो रहता है, सेंट्रल पोर्शन. So that joins 2 parts. वो कार्पोफोर. Then vitta means oil globules, oil containing gland. Endosperm, test and reproduction. You can see over here, midday, in the midday you are going to get a volatile oil. Okay? And इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, what is the main chemical constant of this coriander? That is known as linalool. Linalool is the main important chemical constant from the volatile oil of this coriander. Okay? So you might have seen this. This is known as a kothambir, cilantro, and the fruits are look like this. Fruits का जो इंग्लिश के known as a coriander fruits. Chemical constant क्या है? 0.3 to 1% volatile oil, known as a D-linalool, also known as a coriander. Then coriandric acetate. Coriander leaves, they are a rich source of vitamin A. Coriander leaves जो होता है, green leaves, उसमें vitamin A होता है. Fixed oils होता है इसमें
some fixed oil is there and proteins are also present in the fruits. तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार आ चुका है, डी लाइनेनॉल जैसे प्रेजेंट इन द कोरिएंडर रोल। ये कोरिएंडर रोल देंगे आपको, अगर ऐसे पूछेंगे कोरिएंडर रोल इज अ एक्टिव कंपोनेंट ऑफ, आपको इजीली समझ में आएगा कोरिएंडर रोल मतलब कोरिएंडर से है, बट आपको ऐसा नहीं है, ऐसा पूछेंगे डी लाइनेनॉल, डी लाइनेनॉल इज अ एक्टिव प्रिंसिपल फाउंड इन द फॉलोइंग वोलेटाइल ऑयल, आपको पूछेंगे कोरिएंडर, डी लाइनेनॉल इज आल्सो कोरिएंडर। यूज क्या है इसका, मैंने जैसे बोला है ऑल आर्बिट्राइज फॉर्स दे आर यूज्ड एज aromatic carnative stimulant flavoring agent and also along with the graping waters. Substitute here is called Bombay coriander, which consists of a less volatile oil. They are ellipsoidal in nature, ellipsoidal in shape. शेप उसका अलग होता है एंड इसका साइज भी बड़ा होता है बॉम्बे कोरिएंडर। नेक्स्ट इज अ दिल, दिल मतलब आपका मूवी का दिल नहीं, तो फिर इमीडिएटली चालू कर देंगे। दिल मतलब क्या है, दिल इसको दिल बोलेंगे। सो इट इज सिनोनिम क्या है, एंथम, एनेथम, एनेथम यूरोपियन दिल, दिल एनेथम और यूरोपियन दिल। ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ एनेथम ग्रेवियोलेंस, एनेथम graveolens, Anethum graveolens, Anethum graveolens, dried ripe fruits of Anethum graveolens, family क्या है अम्बिलिपेरिया के, it should contain not less than 2.5% of volatile oil। डी मतलब इसको अपन मराठी मध्ये याला शेपू म्हणतात, शेपू, शेपूची भाजी खाल्ली चपाती भाजी खाल्ली तर तुम्हाला ढेकरं, शेपूची भाजी खाल्ली का ढेकरं येतं। आर यू गेटिंग माय वॉइस? डी मीन्स शेपू and it is a dried fruit often from Anethum graveolens family Umbelliferae. It should contain not less than 2.5% of volatile oil. It is indigenous to South, cultivated in the England, Germany, Romania. Chemical constituent क्या है देखो, 2.4 to 4% volatile oil. Again क्या है, carbon. The main constituent, 43 to 60% volatile oil constitute of carbon. It contains the hydrocarbon, lime, limonene, used to separate the aromatic stimulant, carminative, used in the gastric disturbances in the infants and children. बच्चे में अगर बच्चे का पेट खराब है तो ये दिल का वाटर देते हैं, ड्राई वाटर, इज इंग्रेडिएंट ऑफ ड्राई वाटर एंड फ्लेवरिंग एजेंट। इट इज सब्स्टिट्यूटेड विद द इंडियन दिल, इट इज अ सब्स्टिट्यूटेड विद द इंडियन दिल, द एनेथम सोआ, इंडियन दिल इज नोन एज एनेथम सोआ। आपको क्वेश्चन आएगा कि Anethum graveolens, Anethum graveolens is known as European dill. Anethum graveolens is nothing but European dill. Anethum graveolens, Anethum graveolens is known as European dill. Indian dill क्या है? Anethum soa is Indian dill. Okay. Now Indian dill consists of a dill allipore. Dill allipore इसमें क्या है? Dill allipore होता है, that is a poisonous substance. The epiol, the epiol, ये कंपाउंड होता है इसमें, epiol, ये poisonous, the epiol। नेक्स्ट आता है आपका ड्रग फेनल, फेनल मीन्स क्या है, बड़ी सोप। फेनल फ्रूट, सिनोनिम क्या है, फेनल फ्रूट, फ्रुक्टस फोइनिकुलम, फ्रुक्टस फोइनिकुलम, फ्रुक्टस फोइनिकुलम, इसके ऊपर आता है फ्रुक्टस फोइनिकुलम। अगेन इट्स द फ्रूट, okay, dried ripe fruit of plant known as the Foeniculum vulgare, Foeniculum vulgare family Umbelliferae, family Umbelliferae। It should contain not less than 1.4% of volatile oil। कहाँ पे पाया जाता है? It is indigenous to Mediterranean countries, largely cultivated in the Romania, Russia, Germany, France, India, Japan। In India, it is cultivated in the Gujarat, Punjab, Maharashtra, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में इसका मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, गुजरात से, महाराष्ट्र में भी ये कल्टिवेट किया जाता है। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन, फेनल इज कल्टिवेटेड बाय डिबलिंग मेथड, इज कल्टिवेटेड बाय डिबलिंग मेथड। ओके, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ड्रिल करना है जमीन में, बट जस्ट बिफोर द स्प्रिंग, स्प्रिंग के पहले इसका डिबलिंग मेथड से सीड्स डालना है। वेल ड्रेन्ड calcareous soil is required। 90% production of this fennel comes from गुजरात only, गुजरात से ही ज्यादा आता है। नेक्स्ट क्या है, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स।
So which type of stomata? Almocytic stomata, they are important. If they are present on the epidermis, then mesophyll containing lignified reticulate parenchyma. Lignified reticulate parenchyma मतलब क्या? If you treat TS of this panel with the chloroglycinol and hydrochloric acid, you will get a pink color of this parenchyma. Parenchyma will look in pink color because they are lignified. Stomata anomocytic stomata. Calcium oxalate से rosette type of calcium oxalate important. Rosette type of calcium oxalate crystal. Anomocytic stomata important. Rosette type of calcium oxalate crystal important. And lignified parenchyma. Alluvial grains are there. Right? Trichomes and starch grains are absent. Trichomes, starch grain is named. Chemical constant again very important. Question 2 बार आ चुका है इसका. Chemical constant. Niper famously 3 to 7% of volatile oil. Cheap active constant of volatile oil. तो volatile oil में दो component होता है. There are two components present in the volatile oil of this phenol fruit. First one is the ketone. Ketone fraction of this volatile oil is known as the, that is a colorless pungent liquid and aromatic odor. ये pungent liquid होता है and that is responsible for the aromatic odor. आपको क्वेश्चन आता है odor of phenol is because of the में आता है आपको एनिथॉल आपको आता है फेनकोन वगैरह. So remember pungency of phenol is because of the odor of phenol is because of the fencone. And also volatile oil consists of phenolic ether, is anethol. Anethol is a sweet in taste and odor. So question ऐसा भी आता है कि which principle from the phenol fruit is a sweet, that is a phenolic ether, anethol. ऐसा भी क्वेश्चन आता है anethol is a dead dash found in the phenol oil. क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा phenolic ether, ऑप्शन बी कीटोन, aldehyde वगैरह. So phenolic ether कौन है? anethol. Ketone कौन है? ketone, fencone. So fencone is responsible for the odor of this phenol fruit and anethol is responsible for the sweet taste. Remember इसके ऊपर दो बार क्वेश्चन है. Other constituent like pyrrandine, limonene, ethyl, charcoal, Esic aldehyde, these are the other constituent. यूज क्या है उसका सेम कार्बोनेटिव है ना. आप खाना खाने के बाद में क्या करते हो? सोप खाते हो. क्यों खाते हो? कि आपका डाइजेशन अच्छा हो. Because it is a carbonative. What do you mean by carbonative? Carbonative means these are the agent which will expel the gases from your GIT. आपके इसमें गैस रिमूव करेगा ये पेट में से. It is aromatic stimulant. It is also expectorant. It is used as a flavoring agent. Flavoring agent use करते हैं. तो अभी एग्जांपल नहीं बोलता ना तो आप हंसेंगे. एग्जांपल नहीं बोलता. बाकी बच्चों के जो ग्लाइकोटर होते हैं उसमें होता है. बाकी बड़े का ग्लाइकोटर जो होता है ना उसमें भी ये फ्लेवरिंग एजेंट होता है. तो ये बड़े का ग्लाइकोटर मतलब क्या है? जो महाराष्ट्र के बच्चे उनको समझ में आएगा. जो महाराष्ट्र के नहीं है उनको नहीं समझ. क्योंकि यहाँ पे बड़े का ग्लाइकोटर अलग होता है. बड़े आदमी का ग्लाइकोटर जो होता है वो एकदम सस्ता आता है. गवर्नमेंट का ये आउटलेट होता है तो उसमें ये बड़ी शो फ्लेवर आता है. Substitution and adulterant. So it is commonly adulterated with the exhausted phenol. Exhausted phenol fruit मतलब क्या? उसमें के volatile oil remove किया है. Exhausted fruit means what? Volatile oil from that fruit has been removed. Okay? And it can be identified by just dipping in the water. Water में उसको डाल दो. Exhausted fruits will sink in the water. Exhausted से जो होता है वो sink करेगा बाकी volatile oil कंटेनिंग नीचे जाएगा. If volatile oil from fruit is removed by extraction with the organic solvent. अगर एक्सट्रैक्शन करके organic solvent से remove किया है ऑयल तो क्या होगा? It will have a typical odor of fusing of oil. मतलब ये इसमें एक false odor रहेगा. Such fruits do not contain fencone. Substitute with different varieties of phenol like बाकी दूसरे कुछ वैरायटी है कौन से इनका यूज करते हैं सब्स्टिट्यूट के लिए. Saxony, Russia, then Romania, French, sweet, Indian, Japanese. These are some varieties of your phenol fruit which are used as a substitute. You can see over here, ये phenol fruit का plant ऐसा होता है. Phenol fruit का plant देखा है हमने हमारे खेत में भी उगाया था. So when
it bears it fruits, it will look like this. तो fruits हो गए इसके, ये बाद में कलर करके ड्राई करके कुछ ऐसा होगा। इसको क्या है, तो अम्बिलिफेरस fruits साथ में बोलते हैं क्रीमोका, इसको एक फीचर्स होता है, तो क्या रहेगा स्टेलोपॉड में, स्टेलोपॉड, ठीक है। बाद में जो जहाँ से फ्रूट आता है वहाँ पे पेडिकल रहेगा, ये दोनों भी, so you can break these fruits into two parts, so क्रीमोका यहाँ से एग्जैक्टली सेम रहेगा, एग्जैक्टली सेम, और उसके ऊपर क्या रहेंगे, रिजेस रहेंगे, रिज लाइनिंग्स, प्राइमरी रिज, सेकेंडरी रिज, so it's a future of your अम्बिलिफेरस फ्रूट known as कीमोका, so अम्बिलिफेरस फ्रूट्स आर nothing but कीमोका, इसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। so final fruit will look like this, TS कुछ ऐसा होता है, phenol is nothing but the active constituent, फेंकोन क्या है, it is a phenolic, okay, anethol is a phenolic ether and फेंकोन क्या है, it is a ketone, याद रखना है। so remaining points we will see tomorrow.